how the entity is complying with that framework. फर्स्ट हो गया लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एंटिटी एंड इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स. सेकेंड हो गया हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क. फर्स्ट हो गया लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एंड सेकेंड इज हाउ दैट एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क. फिर आ गया लास्ट पॉइंट. Auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance with those laws and regulations that have direct and material effect on financial statement. Next topic is responsibilities relating to other laws. पहला था direct effect वाला, ये वाला है other laws and regulations that do not have direct effect on financial statement but their compliance is fundamental to operating aspects of बिजनेस. इसमें हो गया अच्छा इसका एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एक्सेट्रा. फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस. ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड के नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिटर को सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का तो आइडिया नहीं होता है ना. वो बिजनेस लॉज पढ़ते हैं, उनको सारे तरह के लॉज का तो नॉलेज नहीं है, इसलिए. सेकेंड पॉइंट इज फॉर अदर लॉज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस दैट मे हैव अ मटीरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड पॉइंट हो गया फॉर अदर लॉज auditor's responsibility is limited to identify non-compliance that may have a material effect on financial statement. Third point is auditor shall perform following audit procedures to identify non-compliance that have a material effect on financial statement. इसका हो गया point. Inquiring of management or TCWG whether entity is in compliance with laws or regulation. Second is inspecting correspondence with regulatory authorities. क्या क्या पॉइंट हो गया? फर्स्ट हो गया इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट और TCWG whether entity is in compliance with laws and regulation, और दूसरा इंस्पेक्टिंग correspondence with regulatory authorities. फर्स्ट हो गया इंक्वायरिंग, सेकेंड हो गया इंस्पेक्टिंग. Now during audit, auditor shall remain alert to possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance to auditor's attention. ठीक है,